Talking about oogenesis in human female today, and it can be defined as formation of a single and haploid ovum from a single and diploid oogonium. So this is going to be the mother cell and this is going to be the daughter cell, but it includes two consecutive divisions, first mitosis then meiosis, and it begins since the birth. It occurs in fetal ovary when the embryo or the fetus is 6 months old. So here you can see what happens actually. From the ovary an ovum is released in the abdominal cavity first, in the body cavity first. This is in the secondary oocyte stage, and then it floats. After that, it is captured by, picked up by the ostium, the opening, and now it goes into the infundibulum part of oviduct. Then it reaches isthmus. Sorry, ampulla. After infundibulum, ampulla, and then isthmus. What happens actually, if an open sex or unprotected sex is done, the male's penis is introduced and the seminal fluid is ejaculated, a number of sperms are released, and then one sperm can be allowed to meet with ovum. Fertilization occurs. If fertilization occurs, then embryonic development occurs. And then embryonic development, after embryonic development, you can see after a long course of division, cleavage division, morula, blastula, gastrula, in the stage of blastula, it gets embedded in the endometrial wall of the uterus. This is the site of embryonic development, fetal growth and development. And after 9 months, a single healthy baby is produced. But how does an ovum form inside the ovary? Two ovaries are there. In a female, two ovaries are there. Each ovary produces one ovum after 28 to 29 days, that is the lunar month. And suppose this ovary forms 6 ova. So this ovary will produce 6 to 7 ova. Why? Because for a human female, the calendar is of 28 to 29 days. 28 to 29 days, right? So in the middle of the menstrual cycle, that is ovulatory phase, this ovulation occurs. So in 12 months, 13 times, 13 ova would be produced. 6 from an ovary and 6 to 7 from another ovary. So 12 to 13 ova will be produced in a year. And from menarche to menopause, menarche means onset of menstrual cycle, 10 to 13 years of age. And then it will stop. Onset of menstruation, 10 to 13 years of age. And stoppage of menstruation, 40 to 55 years of age. So this duration is of 35 years on an average. 35 years. 35 into 13. 35 into 13. Every year there would be a production of 13 ova. 6 from an ovary and 6 to 7 from another ovary. So 35 years is the reproductive age for a female. From onset of menstruation, that is 10 to 13 years, menarche, and to the stoppage of menstruation, 45 to 50. So average 35 years into 13 ova. So round about 40 to 450 ova will be produced in the reproductive life of a female individual.
Now we have to study the section of the ovary, how an ova forms. Okay? Next. Now we can see the section of an ovary. The ovary, this is the ovary, single ovary of a human female. And here what happens, you can see the stroma is there. And this stroma is divided into two parts. Peripheral cortex, this is cortex, right? And this is medulla. This part is medulla. The outer part is cortex and inner part is medulla. What happens actually, as it occurs in fetal ovary, so this is the ovary of a fetus female, because ये जो काम हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, inside the mother's womb, mother's womb, hystera, uterus, and here you can find this is the fetus female. Inside the ovary of the fetus, female fetus, it is taking place. It has started. You can see a number of oogonia are formed here. And it is believed that in a single ovary, about 2 million, couple of million oogonia or ova mother cells are formed. But as the human female attains puberty, what happens? Only 60,000 to 80,000 oogonia are left in each ovary. Others are released out. This release is called what? The follicles, you can say, which are released, they are called, the process is called what? Actually, the follicles are called atretic follicles, and the process is called follicular atresia. So 2 million oogonia are formed. No more oogonia are formed or added after the birth. Only at this stage oogonia will be formed, 2 million. Okay? Now, this oogonium further develops, and after development what happens? It is covered with layers of granulosa cells. It becomes primary follicle. After that, it is covered with more layer of granulosa cells and a theca layer. Now this is called secondary follicle. And then more layer of granulosa and two theca externa and theca interna are formed. This is called tertiary follicle. So these are ovarian follicle. These are ovarian follicles. Primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle. Now this oogonium undergoes development inside. It becomes primary oocyte. And this primary oocyte with granulosa layer becomes primary follicle, ovarian follicle. This primary oocyte with more layer of granulosa and theca becomes secondary follicle. This primary oocyte with more layers of granulosa and theca externa and theca interna, two separate layers, become tertiary follicle.
At this stage, primary follicle, primary, actually 2 millions oogonia are present here. But at puberty, the primary follicles, what happens? They remain 60,000 to 80,000 only in each ovary. 2 million oogonia in each ovary initially. After that, remaining number is 60,000 to 80,000. Others are released. Follicular atresia. The event is called follicular atresia and the follicles are called atretic follicles. Now, inside primary follicle, primary oocyte, inside secondary follicle, primary oocyte, inside tertiary follicle, primary oocyte. This primary oocyte is getting developed, and at this stage, what happens? At this stage, it further develops to form secondary oocyte. In this form, secondary oocyte, in this stage, secondary oocyte stage, this structure is released. Actually, it is in the phase of secondary oocyte, and we say that an ovum is released. We say that ovulation has occurred. We say that this phase is ovulatory phase, but actually it is secondary oocyte. It is formed after first meiotic division. If this secondary oocyte gets fertilized by a sperm in the oviduct, then it would become an ovum. But what happens? You see the discipline in biology. The sperm confirms that you are immature, you get mature, you complete the meiotic division, second meiotic division, then we are going to fuse with. So, a sperm allows further growth and development. As it becomes oocyte or ovum, then the sperm is ready to fuse with. So, in the form of secondary oocyte stage, ovulation occurs. The process is called ovulation. And this is not the ovum, actually secondary oocyte. This has been formed after first meiotic division. Second meiotic division has not completed till now. So this is an immature one. After that, when secondary oocyte is released, okay, we say that an ovum is formed. We say that ovulation has occurred. Now, if it is fertilized, then further embryonic development would occur. If it is not fertilized, then it would come out during menstrual phase. And it comes out with endometrial wall of uterus and a lot of blood. The blood is arterial and the amount varies, the duration varies. Sometimes it is heavy bleeding, sometimes it is slow bleeding, sometimes no bleeding. And it is confirmed that it is widely said that cycling menstruation is the indicator of female sexual health from menarche to menopause. Sometimes it may not occur, menstruation may not occur due to poor health, stress, due to the side effects of a medicine. So there may be some genetic defects also. So that is another thing. What happens actually after the release of an ovum in this form, secondary oocyte stage, ovulation has occurred. This entire follicular part becomes corpus luteum. Corpus luteum. Corpus luteum, it becomes what? Corpus luteum. Luteum yellow in color. तो अचानक से हो गया corpus luteum? No, no. The left out part after release of secondary oocyte. Remember, after release of secondary oocyte, the left out part is just a red bag-like structure. This is called corpus hemorrhagicum. That is not taught today. Corpus hemorrhagicum, reddish. Then it becomes yellowish, corpus luteum. Corpus luteum. And then corpus luteum degenerates and it becomes corpus albicans. What has happened? Suniya. After the release of secondary oocyte as an ovum, ovulation, this entire structure, the covering, follicle, ovarian follicle, has become corpus hemorrhagicum. Corpus hemorrhagicum, ये आजकल नहीं बताया जाता. It is reddish. And then it becomes
yellowish luteum, macula lutea in the eye and corpus luteum both are yellow in color. This is the question of NEET. सोचिए कलर पर आ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन. So first it becomes, first the left out part becomes reddish corpus hemorrhagicum, then becomes yellowish corpus luteum and then becomes corpus albicans. But still inside the ovarian follicle, ये जो ovarian follicle है बार बार ये जितने भी बनने थे, फॉर्मेशन और एडिशन जितना भी होना था बिफोर बर्थ होगा, क्योंकि ये फीटल ओवरी में हो रहा है. उसके बाद नो मोर ओगोनिया आर गोइंग टू बी फॉर्म, पहले ही बन गए 2 मिलियन. उनका डेवलपमेंट होगा अंदर में, प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, इस तरह से होगा. तो ये जो होंगे ये ओवरी के अंदर होंगे, ओवरियन फॉलिकल के अंदर होंगे. ये कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है जो आगे तक चलता रहेगा. अब हमें समझना है कि एक साइकिल, वन साइकिल ऑफ oogenesis कैसे होगा, उसको आप समझिए कि ये oogoneum से कैसे बना, प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट, और फिर ओवम कैसे बनेगा ये समझना है. ये तो ओवरी के अंदर हो रहा था, ठीक है, और उसके ऊपर ग्रेनुलोसा लेयर बने और ग्रेनुलोसा और थीका लेयर बने, फिर ग्रेनुलोसा लेयर बने और थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना बने, ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल बन गया. जब ये मैच्योर हो गया तो इसी को कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल. ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर, डे ग्राफ के नाम के ऊपर ग्राफियन फॉलिकल, उससे ये सेकेंडरी ओसाइट निकल गया. उसके बाद कॉर्पस हेमोरेजिकम बना, कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस अल्बाइकस बना. ये रेडिश हुए, ये येलोइश हुए, ये व्हाइट हुए. तो ये लगातार ये प्रोसेस चलता रहेगा. ये एक फॉलिकल के अंदर ऐसा हो रहा है, ऐसे हजारों लाखों ये होते रहते हैं. इनका आगे डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होता रहेगा, इसको समझना पड़ेगा. तो आप समझिए कैसे एक oogoneum जो डिप्लॉयड था वो कैसे एक सेकेंडरी प्राइमरी ओसाइट में बना, इसके अंदर फॉलिकल के अंदर कैसे सेकेंडरी ओसाइट बना, कैसे ओवम बना, इसको समझना है. तो आप ध्यान से पढ़िए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए. अभी और भी बाकी है, इसके आगे मैं बताता हूँ. देखिए नेक्स्ट पेज पर. अब देखिए ह्यूमन फीमेल के अंदर जो ये ओवरी है उसमें एक oogoneum बना है. तो क्या ये एक oogoneum बने तो थे कपल ऑफ मिलियंस ऑफ oogonia, तो क्या ये oogonia जो यहाँ बने वो फीटल ओवरी में बने? तो फिर आपको यह समझना है कि स्टार्ट यहीं से हुआ. नहीं नहीं, गलत. कहाँ से स्टार्ट हुआ? स्टार्ट हुआ, सुनिएगा ध्यान से, इसको ध्यान देने की जरूरत है. पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल एक आया. ये देखिए फीटल डेवलपमेंट के दरमियान होता है, लोग बताते नहीं और समझना भी नहीं चाहते लोग. प्राइमोर्डियल जर्म सेल पीजीसी आया. ये पीजीसी क्या है? पहले कहीं फीटस के बॉडी में था. कहां था ये बताइए, कहां था? एक्स्ट्रा गोनिडियल था. ये गोनेड के बाहर था, ये ओवरी के बाहर था, एक्स्ट्रा गोनिडियल था. तो यूरिनरी डेवलपमेंट के दौरान एक्स्ट्रा गोनिडियल था पीजीसी. आ करके क्या किया? सेट कर गया, ये सेटल कर गया. कहां कर गया? ओवरी के अंदर, फीमेल गोनेड में सेटल कर गया. तो सेटल कर गया, ठीक है, एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल आया, आकर के सेटल कर गया, ये oogoneum हो गया. इसको oogoneum बोल दीजिए. अब ये oogoneum कैसा है बोलिए? ये oogoneum डिप्लॉयड है, 2n=46 डिप्लॉयड है, 2n=46 ह्यूमन में चल रहा है. अब ऐसे ऐसे 2 मिलियन oogonia है, ठीक है. अब इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा के लेयर बन रहे हैं. बनते 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 अब देखिए कि जब ये बन रहे हैं, इस दरमियान आपको बता दें कि अभी इनके अंदर लगातार रिपीटेडली, मान लीजिए चलिए 2 बार माइटोसिस हो गया. ये माइटोसिस हो गया. तो माइटोसिस कैसा डिवीजन होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है. इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम, तो इट इज ऑल्सो 2n. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 2n. नाउ this oogoneum is called ovum mother cell. Ovum mother cell, ये mother cell है. and as it is going to divide म्यूटिकली, आगे जाके म्यूटिक में बटना है, तो अब इसको कहेंगे मियोसाइट. आगे जाके इसको मियोसिस करना है, तो इसको कहेंगे मियोसाइट. मियोसाइट मतलब हमेशा डिप्लॉयड है, अभी भी डिप्लॉयड है. चलिए एक को कंसीडर कर रहे हैं.
एक को कंसिडर कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको स्पेस देंगे, थोड़ा ग्रोथ फेज में ले जाएंगे। ये तो डिवीजन माइटोसिस का हो गया, थोड़ा इसको नरिशमेंट देंगे, ग्रोथ फेज करेंगे। अब ये कहलाएगा प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte कहलाएगा। प्राइमरी oocyte जो है अभी भी ये 2n = 46 है। और इसके ऊपर देख लीजिए, इसके ऊपर आप देखिए, ये इसका ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है और इसके ऊपर थोड़ा ग्रेनुलोसा सेल बन गया। अभी हो गया प्राइमरी oocyte प्लस ग्रेनुलोसा सेल मिलकर के हो गया प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। प्राइमरी oocyte प्लस ग्रेनुलोसा लेयर छोटा छोटा सेल्स का लेयर, तो ये क्या हो गया प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। अब इस प्राइमरी oocyte इसी समय, अब ये कहां हो रहा था, ये किसके अंदर हो रहा था, ये फीटस के ओवरी में हो रहा था, ये फीटस के ओवरी में प्रक्रिया है। इस बीच फीटस अभी तक 6 मंथ्स की थी, अब ये डेवलप करके 9 मंथ्स के बाद अब बर्थ होने जा रहा है। बर्थ होने जा रहा है तो क्या हो रहा है, बर्थ होने जा रहा है, इस बीच में अब मियोसिस शुरू हो जाता है। अब मियोसिस शुरू होता है, अब मियोसिस रिडक्शन से डिवीजन। जैसे ही मियोसिस शुरू होता है प्रोफेज 1 में ही, यहां प्रोफेज 1 में, इस प्रोफेज 1 में यहां पर देख लीजिए, प्रोफेज 1 में यानी मियोसिस 1 में यहां पर इनको रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है, अरेस्टेड, कहते हैं अरेस्टेड एट प्रोफेज 1 मियोसिस 1। अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार कर लिया गया, नहीं, रोक दिया गया। अरेस्टेड मतलब स्टॉप्ड एट प्रोफेज 1। मियोसिस 1 में जो आया, आपको मालूम है मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है, एक बार इक्वेशनल होता है, एक बार पहले रिडक्शनल होता है तब इक्वेशनल होता है। तो आपको मालूम है कि यहां पर 2 बार न्यूक्लियस बटेंगे, 2 बार साइटोप्लाज्म बटेंगे। तो इसमें इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ऐसे चलेगा। अब ये प्रोफेज 1 जो है, इसके फिर 5 स्टेज होते हैं, उसको लेजी पैडी से स्टार्ट कीजिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो प्रोफेज 1 में ही इसको रोक दिया गया है। कब, बर्थ पे, बर्थ, एट बर्थ इसको रोक दिया गया। बर्थ हो गया, फीमेल बेबी का बर्थ हो गया, लेकिन उसको ओवरी में ये जो प्रक्रिया चल रही थी oogenesis की, दैट हैज बीन अरेस्टेड एट प्रोफेज 1, राइट। बर्थ हो गया, बर्थ हैज टेकन प्लेस। अब फिर से स्टार्ट होगा, फिर से स्टार्ट होगा क्या प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 स्टार्ट होगा, 2 अनइक्वल स्ट्रक्चर्स वुड बी फॉर्म्ड। दिस स्मॉल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी, first polar body, and now this is called secondary oocyte. अब ये बर्थ हो गया, ग्रोथ भी हो रहा है, पुबर्टी भी हो गई, अब धीरे धीरे। अब ये चालू ही था, प्रोफेज 1 चालू ही था, चालू हुआ, प्रोफेज 1 चालू हुआ, जन्म के बाद प्रोफेज 1 चालू हुआ, फिर मेटाफेज 1 हुआ, एनाफेज 1 हुआ, टेलोफेज 1 हुआ, साइटोकाइनेसिस 1 हुआ, तब जाकर के ये मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट पोलर बॉडी बना है और सेकेंडरी oocyte। आप बोलेंगे कि ये पोलर बॉडी बनने का कंसेप्ट क्या है, पोलर बॉडी का दूसरा नाम पोलोसाइट है, पहली बात, अदरवाइज कॉल्ड पोलोसाइट। क्यों इसको बनाया गया, ताकि इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ किया जा सके। कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया बोलिए, प्राइमरी oocyte में 2n = 46 था, ये कितना हो गया, ये 23 हो गया, ये 23 हो गया, शुरुआत में 46 था। अब बोलिए 46 से 23 करने की क्या जरूरत थी, अरे हमको बनाना क्या है, हमको मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नीड्स टू बी रिड्यूस्ड टू हाफ, इसीलिए हमको इसको बनाना पड़ा। अब ये पोलर बॉडी का दूसरा नाम पोलोसाइट है, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म आल्सो। नाउ secondary oocyte has been formed, right, with n = 23 set of chromosome. After birth, growth has taken, development is taken. Now at puberty, this secondary oocyte has been formed. At this stage, the ovum is going to be released, and this is called ovum, but this is not rightly said. Actually, it is secondary oocyte. This release of secondary oocyte is called ovulation. Oogenesis means manufacture of an ovum. Here, release of an ovum, but in the form of secondary oocyte stage is called ovulation. It occurs in the middle of the menstrual cycle, 14th to 16th day. So what happens, at this stage, suppose menstrual cycle is of
a lunar month, 28 to 29 days, and the ovulatory phase is going to occur at 14th to 16th day. There in the female body you can find 1 degree Fahrenheit rise in temperature, rise in body temperature, 1 degree Fahrenheit. So that is not the fever, that is the adaptation. And at this stage, from the vagina of the female, here mucus secretion would occur. That is one wiry structure, spin Barkett test. This is spin Barkett test. So ovulation means release of secondary oocyte in the form of ovum. This is what we call ovulation, and it occurs at the middle of the menstrual cycle. And at this stage, one secondary oocyte is released. Now it further undergoes meiosis 2 would occur. And this, meiosis 2 is reductional in nature. No, equational in nature. Means the number of chromosome would remain the same. What happens actually? It is believed that at metaphase 2, at metaphase 2, it is once again arrested at metaphase 2. MPF factor, metaphase factor is there. It remains in metaphase 2 factor. Now as the sperm comes and this MPF factor metaphase पे जो arrest कर दिया गया था, this MPF, this metaphase 2 factor is removed by the sperm and it is allowed to complete another डिवीजन एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स वो शुरू करेंगे. मेटाफेज पे जो रोक दिया गया था मेटाफेज 2 पे, उसको हटा के एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एनाफेज 2 से चालू करेंगे. एंड स्पर्म हेल्प्स टू कंप्लीट meiosis 2. And as meiosis 2 is completed, what happens? Second polar body is formed, second polar site. Once again, this polar body is formed. And now, after the completion of meiosis 2, this single structure is called ooted or ovum. Ooted or ovum. So, a single functional haploid ovum has been formed, and now the oogenesis comes to completion. It does not further undergo, as you see in the case of spermatogenesis, one spermatid undergoes differentiation to form a spermatozoon. That differentiation phase is lacking here. This ooted is called ovum. No further differentiation phase. So, first point, oogenesis in human female, it occurs in fetal ovary. First point. Second point, primordial germ cells are there which are present outside the ovary. This PGC gets settled here and now it is called oogonium. First mitosis occurs, then growth phase occurs, then meiosis or maturation phase occurs. No further differentiation phase. So 3 phases are only there. First is multiplication phase, second is growth phase, and third is maturation phase. No further differentiation phase like a spermatid into a spermatozoon. No. Initially oogonium is diploid, and then you see repeatedly mitosis occurs, primary oocyte is formed, then secondary oocyte is formed, then ooted is formed. Now question is asked. Oogonium. Reading you can see. Oogonium. Oogonium is diploid. Primary oocyte is also diploid. Secondary oocyte is haploid. Ooted is haploid. How many are diploid? ये क्वेश्चन पूछा जाता है. Oogonium diploid, primary oocyte diploid, secondary oocyte and ooted are haploid. Means 2 diploid structures initially and then 2 haploid structures after that. उसके बाद 1 oogonium
one primary oocyte, then one secondary oocyte, then one oocyte. आपसे पूछे how many ova are formed from 25 oogonia. अरे एक oogonia से एक primary oocyte, एक secondary oocyte, एक oocyte, तो 25 oogonia से कितना बनेगा? 25 ova. आपसे पूछा जाएगा 25 ova कितना प्राइमरी oocyte बनाएगा? 25. कितना secondary oocyte? 25. Because one oogonium, one primary oocyte, one secondary oocyte, one oocyte. It is not just like spermatogenesis. It is quite different from spermatogenesis, and you can see every time one functional structure is being formed. One oogonium, one primary oocyte, one secondary oocyte, one oocyte or ovum. So one single haploid, as you can see that a single haploid functional ovum has been formed. This is called oogenesis. Excuse me. So I hope that you have enjoyed my teaching style and the concept I have given, and you can apply it for solving objective as well as subjective questions. So it would be beneficial for you and for taking the challenges of board exam and the NEET exam both. So you should like, share and subscribe my channel. This is my appeal to you because you are getting something, and you are getting something precious. You stay with us, you give some time and you try to understand the concept, you will be crowned with grand success in coming days. God bless you. Good luck.